हेलो एंड अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल द लिसनर्स ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। आप सभी का स्वागत है। आज का पहला सेमीफाइनल मुकाबला इन द वुमेन्स वर्ल्ड कप ऑल सेट टू बिगिन इन वेलिंगटन, न्यूजीलैंड। आई एम साक्षी मांडवाल बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज। मेरे साथ आज यहाँ पर मेरे बहुत ही खास दोस्त और को होस्ट अमित अरोरा इज ज्वाइनिंग मी इन द स्टूडियोज। गुड मॉर्निंग अमित। A very good morning. It's 3 a.m. and Sakshi says it's all set to start the first semi-final, but it is still drizzling in Basin Reserve, Wellington. So will rain play a big part here? But what a cricket World Cup we have seen 8 teams, and now we are on to the semi-final stage. And to help us understand about the first semi-final between unbeaten Australia and unpredictable West Indies, we've got former India cricketer Jaya Sharma. Good morning. Good morning. And G. Rajaraman, sports journalist. A very good morning, Raja. Good morning, Amit and Sakshi. जया, क्या बारिश यहाँ पर एक महत्वपूर्ण रोल निभा सकती है? देखिए अमित, बारिश और जो टीमें जो कर रही हैं मेरी समझ के बाहर हो रहा है। अभी 3 बजे हैं और आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोलूं, बट डेफिनेटली रेन हिट गेम और वेस्ट इंडीज ने बहुत सारे अपने गेम्स ऐसे खेले हैं जो कि बहुत बड़ा गेम नहीं हुए, बट अगेन इट्स ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, सो आई थिंक इट विल बी टफ फॉर वेस्ट इंडीज। ऑल्सो राजा, आई थिंक गोइंग, अगर आज का मुकाबला जो थोड़ी शहरों में शुरू होगा, अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया का अभी तक का जो रन रहा है वो बहुत स्मूथ, बहुत सॉलिड रहा है। इन अ वे द टीम कुड ऑल्सो प्ले द रोल ऑफ इंटिमिडेशन ओवर वेस्ट इंडीज, डू यू थिंक टुडे? But first they need to get the toss going. Yes. There will be a delay because of the rain there, but I'm sure there will be full day's play. You will actually see a contest where Australia not only intimidates but also gets into the final. They've got a job to do, और वो focus अगर वो रखेंगे कि हमें final जाना है और वहाँ पे भी जीतना है, तो तब जाके अच्छा खेल सकते हैं. Otherwise there can be an upset, and West Indies has done a few in this World Cup. But I think Australia is very unstoppable. लेकिन मेरे सोच में यह है साक्षी कि we could have been so easily discussing India versus Australia. और अगर इस वर्ल्ड कप में कोई एक टीम थी जो ऑस्ट्रेलिया को रोक सकती थी, वो भारत की टीम थी. They played some outstanding cricket in patches and they played some very poor cricket. Unfortunately, they lost out on the place in the semi-final. जी, 27 मार्च को जो अहम मुकाबला था जहां पर भारत दक्षिण अफ्रीका आमने सामने थे, आखिरी ओवर तक वो मुकाबला गया और लास्ट बॉल पर दूपरी ने जिस तरह से वहां पे अनबीटन 52 रन्स की पारी खेली, भारत हार गया. 3 दिन हो गए जया. Has it sunk in yet? No, not at all. It cannot be, because I have witnessed many defeats like this, and that was really heartbreaking because एक तरफ एक जो सेकेंड लास्ट बॉल थी उस पे विकेट मिलना और उसको नो बॉल होना, आई थिंक समथिंग वाज नॉट गोइंग राइट फॉर इंडिया देयर. And I think that's the beauty of a game like cricket, where it is not one player you are worried about. It's always the 11 players, it's always the combination. And Australia has looked very formidable in this. Not only their batters, not only their bowlers, they've fielded brilliantly. I think when you have a team playing such good cricket and peaking at the right time, 7 मैच जीते हैं. आसान नहीं होता है 7 मैच जीतना, but it is the side to beat in this World Cup. जी, इस समय भारतीय समय के अनुसार 3:05 हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आग्रह करूंगा कि अगर आप जया शर्मा, जी राजारमन से कोई सवाल करना चाहें तो फोन कर सकते हैं. 011 दिल्ली का STD कोड है और नंबर्स हैं 26497023, 26497024. That's 26497023, 26497024. जया, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, आज अंतिम 11 में एलिसी पेरी नहीं होंगी क्योंकि वो इंजर्ड हैं, तो ये क्या बड़ा झटका है ऑस्ट्रेलिया के लिए? डेफिनेटली शी इज़ बीन अ गुड प्लेयर फॉर देम, और बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर हैं. हम जानते हैं कि किस तरीके से वो कॉम्बिनेशन में सपोर्ट करते हैं, और आप सेमीफाइनल खेल रहे हैं और उसमें अपने एक क्रूशियल प्लेयर को खोना डेफिनेटली किसी भी टीम के लिए झटका हो सकता है. बट जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, आई डोंट थिंक सो कि वो किसी एक प्लेयर पर डिपेंड करते हैं, बिकॉज एवरीबडी स्टेप्स टू द ओकेजन एंड एवरीबडी इज परफॉर्मिंग. So I think yes, it's a big blow to the Australian team, but I think they'll get over it. You will find Australia dominate opposition. They will get there. Toss जीतो या हारो उनको नहीं फर्क पड़ता. अच्छा क्रिकेट खेलना चाहते हैं, and I think whoever comes in, whether it's McLaren, for example, will want to assert their supremacy over the rivals. And West Indies will count itself lucky that they sneaked into the semi-final.
तो ऑस्ट्रेलिया को पता है कि वेस्ट इंडीज को हरा सकते हैं, तो whoever steps up, whoever comes into bat or has got a ball in hand will give their 100%, and that is the quality of Australia, not only in their women's team, not only in their men's cricket team. ऑस्ट्रेलिया के कोई भी स्पोर्ट ले लीजिए आप, दे गिव देयर 100% एफर्ट ऑन द फील्ड, एंड आई थिंक देयर आर लेसन्स फॉर ऑल ऑफ अस, नॉट जस्ट दोज हु फॉलो स्पोर्ट बट ऑल्सो फॉर दोज हु बिलीव इन एफर्ट इन लाइफ एंड नॉट वरी टू मच अबाउट द रिजल्ट्स. रिजल्ट तो आते रहेंगे, 7 मैच जीते हैं, बट इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द एफर्ट दैट दे पुट इन. जी, पर जिस तरह से वेलिंगटन में वेदर कंडीशंस हैं, 16 डिग्री सेल्सियस, ओवरकास्ट कंडीशंस, लाइट ड्रिजल हो रही है, तो अगर यहाँ बारिश रुकती है जया, मैग लेनिंग ऑस्ट्रेलिया के कप्तान, स्टीफानी टेलर वेस्ट इंडीज कप्तान टॉस जीतें तो क्या बेहतर निर्णय रहेगा उसके बाद? आई थिंक जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया फॉर्म में है, चाहे बारिश भी हो रही है, आई थिंक दे विल गेट टू बैट फर्स्ट, और इफ दे ऑप्ट टू बॉल आल्सो, that's always perfect, because they will be knowing कि उनको टारगेट क्या अचीव करना है. आप कह रहे हैं it will be a good toss to lose for Lenning. No, it will be so it's the way they are playing. I think toss doesn't matter for them. See, they will take the toss out of the equation. Okay. Australia will definitely take the toss out of the equation. उनको नहीं फर्क पड़ता पहले बार गेंदबाजी करें या पीछे करें. This is a day game in Wellington, so very surely they will not worry about dew factor etc. और pitch would have been covered. हमें जब बारिश हो रहा था तो pitch would have been covered, and the covers there don't allow too much sweating. Normally moisture on the pitch वाली बात हो जाती है, आप टॉस जीतो तो गेंदबाजी करना चाहेंगे अगर there is moisture in the pitch. So it depends on what kind of track the captain sees, and then they will make a decision. But I think people will want to bat first, put an imposing score and challenge the opposition. Yeah, Jay, so this brings me to the next question, क्योंकि आपने बोला जैसे अभी, and Raja also seconded the fact that Australia would want to put the toss out of the equation given how strong a team it has been throughout the tournament. But West Indies के लिए वहाँ पे situation even more intimidating एक तरीके से हो जाती है, because they've been very fairly inconsistent. They've only won 3 out of the 7 games, sometimes even due to luck we could say. So West Indies को आज के खेल में किस तरह से आपको लगता है स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए if they wish to look at defeating the Australians? I think West Indies का जो एक good जैसे बोलेंगे कि point है, that is their batters. जो बैटर्स इतने एक्सप्लोसिव हैं कि जब वो जिस दिन पे चलते हैं वो कोई भी अपोजिशन को थ्रैश कर सकते हैं. सो आई थिंक अगर रेन भी हो रही है, दे कैन ऑप्ट आउट टू बॉल फर्स्ट एंड देन ट्राई टू अचीव दैट टारगेट, because they have the capability to chase when their batters clicks, and they have some world-class batters with Deandra Dotte and Stephanie Taylor. Yes. So I think that's the best bet for them. Absolutely, and not to forget Hayley Matthews, who's had a very good World Cup, both with the bat and ball. She's been an outstanding all-rounder, Hayley Matthews of West Indies. Absolutely, and not just now, for a long time. When you have players of that quality, 1 to 11, or actually 1 to 15, anybody can replace anyone else in the squad. So, which is why I think Elise Perry might not be missed so much, even though the name is big and is a star performer. Australia, you will expect everybody to chip in and do a good job. West Indies की बात हम करते हैं, साक्षी आपने छेड़ा था West Indies का बात. They have explosive batters 1 and 2 and 3 maybe. उसके बाद तो वो लड़खड़ा जाते हैं. We have seen that happen. Yes. So they will hope that 1, 2 and 3 will go out there and make a score of 275 to 300 and put pressure अगर वो टॉस जीत के बल्लेबाजी करना चाहें. I don't think they have got a couple of good spin bowlers, but ऐसे pitch में, ऐसे conditions, day game में, I don't think the spinners will make a difference. But Raja, you just raised one point over here कि 1, 2, 3 के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, या अगर 1, 2, 3 275 तक का स्कोर बनाने में वेस्ट इंडियंस को एड कर सके. डू यू नॉट थिंक दैट्स एक्चुअली पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द ओपनिंग बैट्समैन, एंड आल्सो द पार्टनरशिप देन प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल बिकॉज़ द रेस्ट वुड फंबल? साक्षी, जितना क्रिकेट अभी देखे हम वर्ल्ड कप में, आई टेक यू बैक टू द मैच अगेंस्ट इंडिया. 100 रन बन गए थे 10 ओवर में. I don't think anybody can forget the thrashing that the Indian bowlers got in that first 10 overs, but India won the match by a big margin. 150 रन से ज़्यादा मार्जिन से जीती थी भारतीय टीम. It tells you that one match is good enough to tell you what kind of batting West Indies has got. जब वो पहले 2 खिलाड़ी या 3 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, उसके बाद तो ढेर लग जाता है. I think the pressure, they understand the pressure. They understand that
The batting is dependent on just a handful of batters, and they will have to put their hands up and take responsibility. जो भी आते हैं बल्लेबाजी के लिए उनको करना पड़ेगा, नहीं करते हैं तो फिर बाहर ही होंगे. I think they are delighted. 12 महीने पहले कोई कहता कि वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल खेलेगा, they said they will be very happy with that. They will take it. So they are very happy to play the semi-final. और जब टीम की एक मानसिकता ये होती है कि हम सेमीफाइनल पहुंच गए, हम इससे खुश रहेंगे, तो then they are in for trouble. जी, भारत ने वेस्ट इंडीज को 155 रनों से हराया था और अगर सेमीफाइनल में जगह बनाई है तो कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज को भारत को धन्यवाद जरूर करना चाहिए. फिलहाल हमारे साथ पहले कॉलर फोन लाइन पर. हेलो. नमस्कार सर. नमस्कार. गुड मॉर्निंग. 3:13. गुड मॉर्निंग सर. इतनी जल्दी उठ जाते हैं आप? सर मुझे उठ तो गया हूँ, लेकिन मैं आज बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज कोई नहीं, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है. ही विल रीच आउट टू अस वंस अगेन. कोई बात नहीं. एक चीज़ मैं पूछूंगी जया जी आपसे, जो अभी राजा कह रहे थे कि बहुत बार ये देखा गया है, ज़्यादातर जैसे अभी राजा ने ही वेरी एक्यूरेटली पॉइंटेड आउट कि बैटर्स जो हैं, हमने देखा है कि शुरुआती जो होते हैं, ओपनिंग बैट्समैन की बात करें या फिर थोड़ा सा फर्स्ट 3-4, उनके ऊपर हमेशा बर्डन या प्रेशर रहता है टू परफॉर्म वेल. Does this not somewhere highlight a major folly that irrespective, keeping Australia out of this, ज़्यादातर टीमों के अंदर ये चीज़ है कि बैटिंग की डेप्थ और कंसिस्टेंसी मिसिंग है? आई थिंक वन थिंग इज दैट आपके पास डेप्थ नहीं, और दूसरी चीज़ है कि आप परफॉर्म नहीं कर रहे. अगर आप इंडिया की भी बात करें, डेप्थ नीचे तक है. आई हैव प्लेड विद देम, आई हैव सीन देम, दे हैव गॉट द डेप्थ, मगर वो टूर्नामेंट से बाहर है. तो एक बात ये है कि आपके बैटर्स उतने अपने पोटेंशियल पे परफॉर्म नहीं करने, और डेप्थ नहीं है, ये अलग. तो जब आप वर्ल्ड स्टेज पे जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि डेप्थ नहीं होती है, बट उस लेवल पे आप जाके परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये डिफरेंस मेक होता है. पर प्लेयर एक्सेप्ट कैसे करता है? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना कि आपका विश्व कप का कैंपेन अब खत्म हो चुका है. Don't ask me. I mean, I will cry for this because we have already seen this in 2005, and it is very, very. We have not come over that particular defeat till now, so it's very, very hard. Although India played very well, I think, but जो earlier जो नुकसान हुआ उन्हें, ये कभी भी रहता है. अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो आपको ऑस्ट्रेलिया की तरह खेलना पड़ेगा. राइट. कंसिस्टेंसी वुड डेफिनेटली बी द की. तो राजा, दिस लेट्स आल्सो जस्ट ट्राई एंड शिफ्ट द फोकस थोड़ा सा टुवर्ड्स द इंडियन एंगल. जया ने कहा दैट वी डिड परफॉर्म वेल बट कंसिस्टेंसी वाज मिसिंग. वेयर डू यू थिंक वी नीड टू गो एंड रिफ्लेक्ट बैक एंड वर्क अपॉन आफ्टर दिस वर्ल्ड कप? See, if you look at how many runs India scored more than 1,600 runs in the World Cup in the 7 matches that it played. No other team has scored as many runs. It has scored the most runs. It has bowled well also. But the big moments, and I think there was some captaincy lapses. हमको डर लगता है मिताली राज के अगेंस्ट बोलते में. We are not speaking against मिताली राज. We are speaking against some decisions of her. हरमनप्रीत को सिर्फ फाइनल में बॉलिंग कराया, फॉर एग्जाम्पल लास्ट मैच में बॉलिंग कराया था. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू कंसिडर batting order. She batted very slowly herself. Maybe Harmanpreet could have walked in sooner, and you needed to take decisions in favor of the team. मुझे लगता है ये हुआ नहीं. Absolutely. Well, glory, they say, is not in falling, but to ensure that you do rise after the fall. Let's try that caller once again. Hello. No problem. आप हमें कॉल कीजिए 011-264-9702. बारिश हो रहा है उधर. So I think the call lines are getting disrupted because of rain in New Zealand. But overall, this edition of Cricket World Cup, we're done with the group stage, 28 matches. We're now to the semi-final stage. As a journalist, do you think the coverage given to Women's World Cup this time, particularly in India, has it been better than before? Is it adequate? I think the last time when India played the final was simply superb. It was also in a slightly better time zone. Australia में था, and I think we were all accustomed to waking up early and watching cricket. So last World Cup, because India played the final, was huge for women's cricket. बट आज नहीं. हमें मेरे टाइम से, मैं शांता रंगास्वामी और डायना एडेल जी, आई एम अ डायनासोर, उनके टाइम से मैं क्रिकेट देखता हूँ. तो इट हैज़ बीन वेरी पॉपुलर. इट इज़ नॉट एज इफ इट इज़ जस्ट बिकॉज वी हैव हैड सक्सेस इन द लास्ट वर्ल्ड कप प्लेइंग इन द फाइनल. हमारी सोच बदल गई. वी हैव सीन लॉट ऑफ गुड क्रिकेट. Someone like me will always complain about how women don't get enough test matches. जब से ये BCCI के छत्रछाया में आए हैं, उनको चाहिए था और टेस्ट मैचेस खेलना. And
look at where we are today, we are demanding a women's IPL and we are probably going to get it. We are not demanding test matches for women cricketer. आप डेप्थ बढ़ाना है, आपका क्वालिटी अगर इंप्रूव होना है, तो you need to have first class cricket. We don't. Why are we not wanting women test matches? So I think it comes down to, from a business perspective, because you need to have funds for that, and the other country needs to have that particular fund. And with India being like, जो भी टेस्ट मैच होगा वो दो कंट्रीज के बीच में होगा, and many countries they refuse to play, and only few of the top countries they like to play test matches. So I think we are still a long way to go in there. Raja disagrees. Definitely, yes. I have to disagree, because it is not about whether one country wants or not. You play against Australia, you play against England, you play against New Zealand, you play against South Africa. These are teams which are ready to come and play test cricket, right? So they play among themselves. आपको खेलने से कोई नहीं रोकता. आपकी सोच नहीं है. There is no force within the BCCI which is driving them towards wanting more test cricket. Like I told you, I'm a dinosaur. मेरे टाइम में रानी झांसी ट्रॉफी क्रिकेट होता था, डेज क्रिकेट. Jaya would have played that. Yes, right? Today it doesn't happen. They only play white ball cricket. Red ball cricket तो इनके लिए इतना रेरिटी हो गया है. और हमें अगर लगता है कि क्रिकेट इंप्रूव हो गया है, हम चर्चा कर रहे हैं विमेंस क्रिकेट पे, हम we are missing the woods for the trees. You need to have red ball cricket for women. That is when we can say that women's cricket is in a healthy state. हम सिर्फ IPL की मांग कर रहे हैं, प्लेयर्स मांग कर रहे हैं, प्लेयर्स के फ्रेंड्स मांग कर रहे हैं, हम भी मांग कर रहे हैं एज जर्नलिस्ट. It is very important that we ask for red ball cricket, and we are not doing that. Right. Okay, now let's come back to the game also today, as we just told our listeners also. आप सब अगर हमारे साथ इस समय भी जुड़ रहे हैं तो बता दें कि वेलिंगटन न्यूजीलैंड में जहां आज पहला सेमीफाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच में होने वाला है, वहां बारिश की वजह से डीलेड स्टार्ट की उम्मीद है. भला ही वहां पे अभी ड्रिजलिंग हो रही है, उम्मीद तो यही कर सकते हैं कि थोड़ी देर में मैच शुरू हो जाए. लेकिन लेट्स जस्ट प्ले आउट ऑल द पॉसिबल सिनेरियोज. जया, आई वुड वांट टू नो कि अगर बारिश होती रहती है आज, तो उस केस में क्या सिनेरियोज प्ले आउट होते हैं दोनों ही टीम्स के लिए, खासतौर से आज के फर्स्ट सेमीफाइनल में? आई थिंक अगर बारिश होती है तो साक्षी डेफिनेटली टॉस कम्स इनटू प्ले, बिकॉज डकवर्थ लूथ आएगा, और देन ऑस्ट्रेलिया नीड्स टू बी केयरफुल, बिकॉज आप सेमीफाइनल खेल रहे हैं. नो डाउट आप सातों मुकाबले जीते हैं, लेकिन ये सेमीफाइनल है, इट्स अ नॉकआउट गेम. एंड जिस तरीके से वेस्ट इंडीज ने जगह बनाई है अपनी, आई थिंक गॉड्स आर इन फेवर. सो दैट विल पुट टॉस इन प्ले. जी, वेस्ट इंडीज की यात्रा की बात करें तो जो ओपनिंग मुकाबला था विश्व कप का, उसमें उन्होंने मेजबान न्यूजीलैंड को हराया था. दूसरे मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को हराया, तो काफी लोग हैरान थे. फिर बांग्लादेश के साथ आखिरी ओवर तक गया था मुकाबला, वेस्ट इंडीज जीत गया. साउथ अफ्रीका के साथ टाई, लेकिन धन्यवाद इंडिया का जिसके चलते वो सेमीफाइनल में आ गए. बट वी हैव अ रिजर्व डे आल्सो. उधर खास्ता आज ज्यादा बारिश हुई, वहां तक जाएगी नहीं. आज दे विल बी प्ले फुल डेज गेम, 50 ओवर का मैच होगा, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद बारिश होगा. आई थिंक फॉर द नेक्स्ट आवर और सो वी विल वॉच सम ड्रिजल्स इन न्यूजीलैंड. वी विल टॉक अबाउट इट, बट I think you will have a full day's आपके game. मुंह में घी शक्कर. नहीं, सुबह में keep that away. We'll have bitter let's coffee. Stick to black coffee. Yes, let's stick to that one. But okay, since you just mentioned Raja कि you're hoping कि आज हम पूरा एक गेम देख सके, उससे पहले कि मैं आगे आपसे दूसरा सवाल पूछूं, हमारे साथ फाइनली एक और कॉलर जुड़ गए. नमस्कार, गुड मॉर्निंग. Good morning, Miss. Nice to hear you, especially at an early time. All four of you are quite alert and Thank you. Thank you. The feelings are mutual. हम आपके लिए भी कहेंगे. Thank you for calling us so early in the morning. and Cricket. it's nice to hear Mr. Raja also. Thank you so much. Good please, morning. But I'd like to have a fundamental. Well, there's some seems to be something We are in happening. bad form, I'm कॉलर्स telling की you. लाइन खुद ब खुद ड्रॉप हो जा रही है. कोई ना ये ना उम्मीद पर दुनिया का गुड स्टार्ट के बाद विकेट थ्रो करने वाली बात होती है. एक और श्रोता है. लेट्स होप वी आर लकी दिस टाइम, जस्ट लाइक वेस्ट इंडीज. हेलो. हेलो. या, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. मैं दीपांजलि बोल रही हूँ उत्तराखंड से. जी, गीतांजलि. दीपांजलि. दीपांजलि. हाँ जी. 3:22. जल्दी उठ गई आज आप बहुत. हाँ जी. क्या पूछना चाहती हैं? मुझे पूछना था कि आज आपके हिसाब से कौन सी टीम जीतेगी, ऑस्ट्रेलिया या वेस्ट इंडीज? जी, तो आप अनुमानों के आने कार्यक्रम में हमारा अनुमान पूछ रही हैं. हाँ जी. आपका अनुमान क्या है? मेरा तो मतलब लगता है मुझे कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी शायद. थैंक यू. जय, जो कंप्लीट डोमिनेंस है
7 मैचेस ऑन द ट्रॉट, जनता भी यही सोच के चल रही है कि सेमीफाइनल फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने जीतना है। डेफिनेटली जिस तरीके से आप ऑस्ट्रेलिया ने परफॉर्म किया है, और क्रिकेट जो है कॉन्फिडेंस का गेम है, मोमेंटम का गेम है, और मोमेंटम शुरू से ही इस पूरे टूर्नामेंट में उनके साथ रहा है, तो डेफिनेटली कोई भी बोलेगा, एज अ क्रिकेटर मैं भी यही बोलूँगी कि ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा बहुत भारी है। राइट, ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा तो बहुत भारी है, लेकिन व्हाट विल इट टेक फॉर वेस्ट इंडीज टू एक्चुअली पुल द कॉर्ड टुडे एंड टर्न इट इन देयर फेवर? एक तो जो ऑस्ट्रेलिया की टीम बस में आ रही होगी, वो बस के टायर पंचर करा बारिश काफी नहीं थी राजा कि हम बस की that टीम won't के टायर- happen. Yes. On a serious note, they'll have to play out of their skins. Going to be very tough for them to beat Australia. वो उन्हें भी पता है, लेकिन अगर nothing to lose, everything to gain वाला attitude लेके अच्छा क्रिकेट खेलें और हर बॉल पे मेहनत करें, they can upset. ये मान के चलना पड़ेगा सबको और वेस्ट इंडियन प्लेयर्स को कि वो सेमीफाइनल खेल रहे हैं और उनके पास क्षमता है ऑस्ट्रेलिया को हराने की। अगर वो सोचने लगे कि हम सेमीफाइनल पहुंच गए, बहुत हो गया, तो देन दे विल लूज वेरी प्रीटी इजीली. इट विल बी अ वन साइडेड गेम एंड दैट इज व्हाट ऑस्ट्रेलिया विल वांट. But West Indies will have to play out of its skin to win this match. Right, and it's not as if the Aussies are invincible, because recall that innings from Harmanpreet in the semi-finals of 2017, 171 not out. You are on flashback mode. I'm not a dinosaur. There is no Harmanpreet in this game. No Harmanpreet in this game, yeah. But we need more competition, Jaya. We don't want dominance of one team like that. World Cup means that anyone on a given day could win. So the word is for that is underdogs. So that word came for a reason, and that's what West Indies will be. And if they have got the chance, I think as a player, as if I'm in West Indies, a team, I would do everything what I can do to win this match, because it's a knockout game. And your analysis of the two captain, how do you see Meg Lanning? How do you see Stephanie Taylor and their captaincy so far? So one thing is very different, among both the captains. Meg Lanning is very, very much stable, and you can see that. मगर जब वेस्ट इंडीज की आप बात करते हैं, आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उनको अब ये जो चांस मिला है, it might turn the tide for the West Indies, because it's a knockout game. Yes, and also the fact that इतने बड़े स्टेज पर आकर सेमीफाइनल्स तक अमित पहुंच जाना अपने आप में किसी भी देश को बहुत बड़े स्तर पर एक्सपोजर प्रोवाइड कर देता है, irrespective of how the game turns out to be. But something that we were just talking about, जो जया जी ने अभी कही बात, अंडरडॉग्स की, और किस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने throughout the tournament dominance रखा है. राजा, this brings to point a very important bit कि एक टीम ने पूरे टूर्नामेंट में डोमिनेट कर लिया. I'll come to that point, but right now we have a caller also joining us. Let's take the caller. Namaskar, good morning. Namaskar, ma'am. The call got disconnected. Sorry for that. Yes, not a problem. Yeah. Just I want to have my ignorance cleared. What exactly is this white ball versus red ball? And can I have some enlightenment on that? And also, we have this normally when there are clear dimensions for all the specifications, we find sometimes the commentators calling it's a longer boundary or shorter boundary, easy to hit for 4s and 6s and all. Is there any difference? You have that discrimination or discretion to enhance the boundary sizes and all? Thank you for both the questions. And Raja? also, yeah. You would like Name of the call. Yes. Okay, so may I know who's calling, please? This is Surya, sir. Okay, thank you, Surya. Thank you, Surya. Yes, thank you. Great questions, both. Dimensions, I think they are at the discretion of the match officials. It's usually the umpires who make the decision, and the match referee now. So it's up to ICC to alter the dimension. They can increase it from 60 yards to 65 yards or 70 yards. We have seen cricket like that, women's cricket played in bigger grounds, but I think they want runs. So आप men's cricket में भी देखते हैं, sometimes the dimensions are shortened because you want more boundaries. You want a spectacle. तो ICC and organizers always want spectacles, तो boundary छोटा ही रख के वो करना चाहते हैं. But look at how effortlessly they are clearing the field. Not just the boundary, but वो जाके stand में गिरते हैं ball when they hit sixes. Some of the power hitting that we get to see is really amazing. But I don't think the dimensions matter too much. You have to play good cricket to win. Red ball cricket,
ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है. रेड बॉल क्रिकेट अलाउज यू टू डेवलप टेक्निक. व्हाइट बॉल में आप सिर्फ 50 ओवर खेलते हैं या 20 ओवर खेलते हैं. इन रेड बॉल यू गेट टू प्ले Test cricket. Your patience is tested, your technique is tested, your temperament is tested. When you develop all of this, you'll become a better cricketer. A lot of people might disagree. They will say that हमारे पास white ball के कितने अच्छे cricketer हैं. But when you play red ball cricket, you will understand the beauty of the game a little bit more. जी, पर जया, white ball cricket 2020 50 overs, red ball cricket test match, pink ball cricket, कोई और ball cricket भी आ सकता है आगे? अगर T10 भी आ गया है तो डेफिनेटली अभी तो बहुत कुछ हो रहा है. But again, maybe yellow ball cricket. As Raja mentioned, I mean, yes, if you need to develop technique, if you need to develop your skills, yes, it has to be a red ball cricket. लेकिन व्हाइट बॉल में नया एक जो निर्णय लिया है आईसीसी ने वो ये है कि 2023 में अंडर 19 2020 वर्ल्ड कप. सो दैट्स अ वेलकम स्टेप. और इस साल कॉमनवेल्थ में भी बर्मिंघम में भी T20 क्रिकेट को शामिल किया गया है. डेफिनेटली. अब अगर आप इसको एक ग्लोबलाइजेशन करना चाहते हैं गेम का, और जिस पे आईसीसी बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, बहुत सारी कंट्रीज में हमने देखा कि आईसीसी इज प्रमोटिंग वुमेन्स क्रिकेट एंड दे आर फोकसिंग ऑन इट. सो डेफिनेटली उसके चलते अगर हम कॉमनवेल्थ में खेल रहे हैं तो ये बड़ी बात है. राइट. और इंडिया के चांसेस, वुड इंडिया बी गोइंग, is there any clash between our commitment towards Commonwealth and some other engagement? I could be wrong here, Amit, but I think it's women's cricket that's being played in Commonwealth. It is not men's cricket, so there will be no clash. Okay. All the best teams will go and play the Commonwealth games. I believe India has got a chance because it'll be 2020 cricket. Yes. And I think India's got a chance. It'll have to step in there believing that it can win the Commonwealth Games gold medal. Right. Let's now come back to the point जहाँ पे हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की. किस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट जया जी डोमिनेशन दिखाया है. एंड यू वर टॉकिंग अबाउट द अंडरडॉग एंगल ऑल्सो. In this entire tournament, keeping aside Australia, do you think rest of the teams were kind of an underdog apart from India? हमने 1600 रन बनाए तो, लेकिन फिर भी we couldn't rise up to the occasion. But let's also keep India out of the picture. Let's talk holistically. Do you think none of the teams could come anywhere near Australia? I don't think so. I mean, we gave a good fight. India gave a good fight to Australia as well. So I think India was never an and apart underdog from India? team. Otherwise, you can see, how Bangladesh has played. 40-4 हो गया था ऑस्ट्रेलिया. Exactly. So that shows what this world cricket has become, and especially on this occasion, this tournament was very, very open for every team. But जो main dominant sides थी, like look at England, they fought their way back into the tournament, but we lost our way throughout this tournament. So I think there were major upsets, and I think this game, if West Indies knows this fact that they have got a brilliant chance, I don't think so as a team, as a player, they would want to go it in win. जी, तो बेसन रिजर्व वेलिंगटन में आज तो पहला सेमीफाइनल है ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्ट इंडीज, और कल 31 मार्च को भारतीय समय के अनुसार 6 बजे दूसरा सेमीफाइनल होगा डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका बीच. तो राजा, टॉप 4 पे बात लाजमी है, लेकिन जो बाकी 4 रह गए, चाहे भारत की बात हो, चाहे सोफी डिवाइन की न्यूजीलैंड की बात हो, बिस्मा मारूफ की पाकिस्तान या निगार सुल्ताना की बांग्लादेश, इन्होंने प्रभावित किया. New Zealand will be definitely upset. अपने घर पे हो रहा है tournament, and you would have expected to play the semi-final at least. They will be very, very disappointed. India was a shock. Not making it to the semi-final was a shock. अगर कहते हैं कि ये game है या होता रहता है, तो then I think we are accepting some amount of failure. We should not. If you want to get better, if you want to get competitive, then you must do some soul searching, find out the reasons why India did not play those big moments well. Like I told you, 1600 runs is a lot. लेकिन हार भी रहे, तो it's important that India does some soul searching. Look at some of the decisions that were made in the run up to the tournament and during the tournament, and then come up with it. I don't think Pakistan and Bangladesh would have fancied a chance of getting to the semi-final. अभी हम और बातचीत करेंगे राजा और जया से, लेकिन जहां तक आंखों देखा हाल की बात है, आपको जरूर बताना चाहेंगे कि आज हमारी कमेंट्री टीम में कौन कौन है. तो आप हिंदी में आज आवाज सुन सकते हैं संजय बनर्जी की, सचिन चट्टे आज आंखों देखा हाल सुनाएंगे अंग्रेजी में, और स्कोरर रहेंगे वेंकट बाल रेड्डी और स्टैटिस्टिशियन मोहम्मद इशाउद्दीन. व्हेन रेन डज कम एंड टॉस इज डिलेड and you really do not know what's going to happen, what goes through to the mind of a player?
Yeah, because it's the same final. Definitely, you don't have something to back yourself up. Yes. Because it's not a league game. Yes. So definitely there'll be butterflies on the stomach. Bilkul. And we are having this extended conversation, Raja, because it's raining. How do journalists adapt? Getting up at 3, covering a story. Do journalists adapt to different time zones easily? It depends on where you are. If you are present in Wellington, then it's a different story. But if you're doing it out of India, I know a lot of us out of Bangalore, for example, who have woken up early to present commentary on websites. Okay. You have woken up early to be here, right? Yes. It's a job, but more than a job, it's your passion. Right. तो जब उठना होता है तो आज ना अमित my alarm didn't ring. अलार्म तो सेट करके रखे हैं 1:30 बजे का अलार्म था बट आई वोक अप एट 1:33 कैन यू इमेजिन so everybody who's passionate about the jobs will enjoy doing this will enjoy coming to All India Radio and spending time and having conversation with listeners but they have been amazing. जया आज कोई बता दो प्लेयर कोई ऐसा है टीम में इंडिया टीम में जब आप खेलती थी अलार्म नहीं बजा और वो लेट हो गया ग्राउंड में आने में नहीं ऐसा कोई भी नहीं हो सकता आज बता ही दीजिए नहीं ऐसा कोई नहीं था Yes, I think नहीं जब टीम होता है तो somebody or the other will wake you up even if your alarm doesn't ring somebody or the other will come knock at the door and wake you up. बट आपको नींद आ जाती है बड़ा फाइनल जैसे आपने 2005 का खेला नींद आ जाती है अगले दिन फाइनल 2005 का जो वर्ल्ड कप फाइनल था मुझे नहीं लगता मेरे टीम का कोई भी प्लेयर सोया था तो अलार्म की जरूरत ही नहीं अलार्म की जरूरत ही नहीं और उस रात भी बारिश हो रही थी और हम यही देख रहे थे कि बारिश होगी या बंद होगी तो मुझे नहीं लगता तो 17 साल हो गए आपको ऐसे लगता है कल का दिन है एग्जैक्टली यस आई थिंक अमित इट्स आल्सो द इमोशन बिकॉज जो खेलते हैं तो वो हमेशा ही जिंदा रहता है दिल के अंदर हम क्योंकि बात कर रहे हैं सुबह उठने की और जल्दी आने की राजा यू टोल्ड मी दैट यू वोक अप एट 1:30 सबकॉन्शियसली कुडंट फाइंड स्लीप व्हाट अबाउट यू जया आज आप भी क्या बहुत जल्दी उठ चुकी थी कि यू वोक अप ऑन टाइम एंड यू केम ओवर ऑल पीसफुली कलेक्टेड टुगेदर वेल एक बहुत बड़ा दर्द था इसके साथ कि इंडिया नहीं है एंड but yes work is work and we have to justify it because it's cricket. Yes, absolutely. But do you think Raja, notwithstanding that India's campaign has ended, Mithali and her team would be watching the semi-final, they would celebrate the spirit of World Cup? No, first I'll have to point to Sakshi that I slept well and I woke up at 1:33. Wow. It's not as if I didn't sleep. नींद नहीं आई वाली बात ही नहीं है. But I don't think the Indian team will watch. Their hearts will not be in watching. बहुत मुश्किल काम है. जब आप we saw the West Indies, for example, watching India versus South Africa. Yes. Because there was something riding on that. Yes. Yeah. Now the Indian team will be preparing to come back. I don't think उनका मन लगेगा कि ये मैच देखें. जैसे हम बोल रहे थे कि काश हम इंडिया वहाँ खेल रहा होता उनके मन में भी यही बात होती कि वी कुड हैव बीन सो इजीली प्लेइंग दिस सेमीफाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड कहीं ना कहीं वो मन में इमेजेस भी बन रही होंगी कि पहले बॉल में विकेट कैसे ली थी झूलन गोस्वामी या फिर हाउ हरमनप्रीत विल गेट अ क्विक फायर 50 एंड पुट इंडिया टू विक्ट्री. नाउ they don't want all this, so they will shut their minds off and come back home. You know, Sakshi, the highs, the lows, the imperfections, all of this is part of the magnificent existence called life. Yes, very, very beautifully put. In fact, Amit, जय मैं आपसे पूछूंगी कि आज का जो मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच में, if there was one thing that I were to ask you for Australia that you think has worked for them and other teams should learn from them, what would that be? One thing. One thing would be, they ticked almost all the boxes in most of the games. If someone fails at the top, someone chipped in, like in Bangladesh. Ashley Gardner came up to the occasion and performed. So that is the beauty of cricket. I mean, it's not like हम generally देखते हैं कि top order perform कर रहा है, then suddenly एक ऐसा game आता है जो आपका middle order crumble कर जाता है. But that is not happening for Australia. Their bowlers, their fielders, even. And the best part of their team is their fielding. The way they field, the way they present themselves on the field, I think every team should learn from them. जी और एक मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा खेला था जिस दिन कप्तान लैनिंग का बर्थडे था उस दिन उन्होंने तो 0 बनाए लेकिन टीम ने फिर भी उनको गिफ्ट में जीत दे दी थी. I think that is what they showed. आपके सवाल का अगर जवाब देना है तो Australia showed what it takes to come together as a team at the most opportune moments. I think they have turned in terrific performances. They have had many stars. The team is the biggest star. I think that's the lesson for all of us to take from Australia. And talking about Australia, today is also special because in Australia there is a Shane Warne Memorial tonight.
A quick word on the legendary leg spinner. A lot has been said about him. कोई नई चीज कह नहीं सकते. He's left memories implanted in our minds. And जब कोई खिलाड़ी goes past his own sport, goes past his own country or her country, and leaves an impact around the world, beyond one sport, beyond just that limited domain of अपना खेल, I think that tells you the legacy of a man. उनके अंदर खोट थी, but he showed what a great human being he could be. With his limitations, with his shortcomings, he was fabulous. Great ambassador for the game. I think he will be missed a lot. Your memories of Shane Warne today? I think I won't be able to say much about this because when you have played the game, and that it felt like someone from very close to the heart has gone, and can't say much about it. Absolutely. So today there is a memorial in Australia, and we do remember him fondly. I think all the beautiful entertainment and matches that he has given and those beautiful deliveries will always stay as an indelible imprint in the minds of cricket lovers. True, and I still remember, Amit, very clearly that just before those hours when he actually left this place, should we say, on his spiritual journey, or first of all, our condolences, and may he always carry on to live at peace wherever his soul is. I think what he said, what he showed was that you could be frail, that you could have limitations, but you live life on your terms. And he went on his terms. He played his cricket on his terms, and he was an outstanding cricketer. But more than that, I think post his retirement, जिस तरीके से उन्होंने राजस्थान की टीम को IPL में जीत दिलाया, motivated young players like Ravindra Jadeja. Shane Watson says he owes his second innings in Australian team to Shane Warne for his captaincy, for inspiring him to play good cricket. Yes. ये contribution जो है वो खुद का ही नहीं अगले में भी दिखने लगा है. And then as a commentator he was fabulous, wasn't he? हम सब उनके जो down to earth, honest comments होते थे, उसको बहुत प्यार करते थे. Absolutely. Not that I listen to much commentary on television because I prefer to watch on mute. अपनी सोच में रखता हूँ. But when you hear commentary later, he's outstanding. He's down to earth and very, very practical in what he said. So Jaya, since you are also into mind conditioning, help us understand, give us some life lessons from cricket, because they say the beauty of life is in its fragility. How do we pep up the Indian cricket lover who's a little distraught because our campaign has ended? What is it that we can learn from cricket and life? I think we can learn many things from sport, Yes. as not exactly cricket. We can learn many things from sport. One is to take up challenge Yes. day in, day out. Yes. Step up to the occasion. Well said. And, Very well said. In life also, everything is a challenge. So from a sports person perspective, we do that. And it's in our blood that we take everything as a challenge and try to win that over. Right. So that's the only thing. Amit, I will add to what Jaya said, that the sun always comes up the next day. Irrespective of whether you've won or lost, the sun always comes up the next day. When you believe that it's only a game, it's only a sport, then you will enjoy it a little bit more. Fans को भी यही सोचना चाहिए कि दूसरा मैच होगा, when India will have another opportunity to perform well, to rebuild the side, to rethink some of its philosophies, and then come out and be very competitive. I'm reminded of a quote by Rabindranath Tagore. It's 3:42, perhaps very apt, that faith is the bird that sees the dawn while it's still dusk. Legend. गुरुदेव के बारे में और क्या बोल सकते हैं. One of India's greatest philosophers, I know, and he's left us some amazing stuff. But this is very practical. What he told us about the dawn and about the bird is very, very practical. I think we have to embrace it. Sport is one of the greatest teachers I have had in my life, and it has taught you how to fail and then bounce back. Yes. How you pick yourself up every time you fail. Our failure is an essential part of sport. And someone like Abhinav Bindra, Olympic Games gold medalist, has said that you learn more from failure than from success. Correct. Right? Yes. So sports se bada teacher, with due respect to all my school teachers and my lecturers in college, sport has been a fabulous teacher for me. Right, and since we're talking about the fact that how the sun always comes up irrespective of how long the night may be, it's also, I think, very apt for the situation today.
बारिश हो रही है लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है और हम भी यही उम्मीद करेंगे कि आज का जो पहला सेमीफाइनल मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच में वेलिंगटन न्यूजीलैंड में होने वाला है, उम्मीद यही रहेगी कि आज हमें पूरा मुकाबला देखने को मिले एंड मे द बेस्ट टीम विन। जया, डेफिनेटली आप इतने बड़े वर्ल्ड कप और जो जिस तरीके से वर्ल्ड कप चला है, सो उस लेवल को जस्टिफाई करने के लिए वी शुड हैव अ गुड गेम, beat Australia, beat West Indies. But the main important factor for me as a women cricketer is the rise of women's cricket globally. Absolutely, and may the women's cricket continue to rise and rise. Raja, one final question before we go on to our commentators. जो डिले हुआ है, अगर आज मुकाबला होता है तो क्या 50-50 होगा या कुछ ओवर्स सब काटे जाएंगे फिर? नहीं, मेरा यकीन है, पूरा यकीन है कि 50 ओवर का मैच देखने मिलेगा। इफ यू लॉस्ट वन अबाउट एन आवर एंड हाफ, जब तक ओवर्स नहीं कटेंगे, 2 घंटे से ज़्यादा अगर डिले हो गया तो ओवर्स कटेंगे, बिकॉज इट इज़ न्यूजीलैंड, डे लाइट इज एक्सटेंडेड देयर, शाम तक बहुत देर तक उधर डे लाइट मिलेगा। इट इज समर इन न्यूजीलैंड एंड यू विल गेट टू सी अ फुल डे, अ फुल 50 ओवर्स क्रिकेट। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करता है, आई सी द गेम एंडिंग अर्ली with them bowling out वेस्ट इंडीज क्विकली। सो उनके लिए नहीं फर्क पड़ता। वेस्ट इंडीज चाहेगा कि कुछ करिश्मा हो जाए, एक छोटा सा गेम हो जहां पे उनके चांसेस और बढ़ जाए। Right. Well, both life and cricket are a game of uncertainties. Let's see how the day unfolds. But अनुमानों के आईने कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए जी राजारमन आपका, जय शर्मा आपका बहुत बहुत आभार। Thank you very much. Thank you.